जोहार झारखंड। श्री वेदुनाथो विजय तेतरामा। Everywhere in the world, women live longer than men. Life expectancies for male are between 50.40 to 81.75 years, while for female, these figures range from 54.85 to 87.53। यानी संसार में औरत की जो आयु है वह पुरुषों से अधिक है जीवन पर्यंत। नगरीय बस्तियों तो वर्धितंत्र आधार है जनसंख्या का आधार व्यवसायिक संरचना। आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% देर कृषि तार में संलग्न हो। भारत में व्यवसायिक संरचना का मापदंड 75% रखा गया है जो देर कृषि तार करते हों। प्रशासन, स्थिति और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति के निम्न प्राथमिकताएं तय की है। पहला है नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि। दूसरा है आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना। महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना। ऊर्जा उपभोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना। वायु प्रदूषण को कम करना। Cash flow statement is a financial statement that summarizes the movement of cash and cash equivalents. That come in and go out of a company. The CFS complements the balance sheet and the income statement. The CFS highlight a company cash management, including how well it generates cash. Investors attempt to look for a company whose share price are lower and cash flow from operation is showing an upward trend over recent quarters. The disparity indicates that the company has increasing level of cash flow, which if better utilized can lead to higher share price in near future. Positive means increasing cash flow from operating activities indicates that the core business activities of the company are thriving. It provides as additional measures indicators of profitability potential of a company in addition to the traditional ones like net income or EBITDA. Cash flow from investing activities. How much cash has been generated or spent from various investment related activities include purchase of physical assets, investment in securities, or the sale of securities or assets. Negative cash flow is often indicative of a company's poor performance. However, negative cash flow from investing activities might be due to significant amount of cash being invested in the long-term health of the company, such as research and development. The balance sheet provides an overview of a company's assets, liabilities, and owner's equity as of a specific date.
The income statement provides an overview of company revenue and expenses during a period. The cash flow statement bridges the gap between the income statement and the balance sheet by showing how much cash is generated or spent in operating, investing, and financing activities for a specific period. Cash flow from operating include following activities: tax received from the sale of goods and service, interest payment, salary and wages paid, payment to supplier for inventory or good needed for production, income tax payment. Tax flow from financing including following activities: dividend payment, stock repurchase, bond offering, generating tax. Cash flow from investing activities provide an account of cash used in the purchase of non-current assets or long-term assets that will deliver value in the future. Investing activity is an important aspect of growth and capital. A change to property, plant, and equipment, a large line item on the balance sheet, is considered an investing activity. When investors and analysts want to know how much a company spends on PPE, they then look for the sources and usage of funds in the investing section of the cash flow statement. Capital expenditure, also found in this section, is a popular measure of capital investment used in the valuation of stocks. An increase in capital expenditure means the company is investing in future operation. However, capital expenditures are a reduction in cash flow. Typically, companies with a significant amount of capital expenditure are in a state of growth. Below are a few examples of cash flow from investing activities along with whether the item generate negative or positive cash flow. Purchase of fixed asset, cash flow negative. Purchase of investments such as stocks or securities, cash flow negative. Lending money, cash flow negative. Sale of fixed asset, cash flow positive. Sale of investment security, cash flow positive. Collection of loans and insurance proceed, cash flow positive. If a company has differences in the value of its non-current asset from period to period on the balance sheet, it might mean there's investing activity on the cash flow statement. Cash flow from financing activities is a section of a company cash flow statement which show the net flow of cash that are used to fund the company. Financing activities including transactions involving debt, equity, and dividends. Capital form debt or equity. CFF indicates the means through which a company raises cash to maintain or grow its operation. A company's source of capital can be from either debt or equity. When a company takes on debt, it typically does so by issuing bonds or taking a loan from the bank. Either way, it must make interest payment to its bondholder and creditor to compensate them from loaning their money. When company goes through the equity route, it issues stock to investors who purchase the stock for a share in the company.
company made dividend payment to shareholders, which represent a source of equity for the firm. Debt and equity financing are reflected in the cash flow from financing session, which varies with the different capital structure, dividend policy, and debt term that company may have. Transaction that cause positive cash flow from financing activities, issuing equity or stock which is sold to investor, borrowing debt from a creditor or a bank, issuing bond which a debt that investor purchase. A positive number of forecast flow from financing activities means more money is flowing into the company than flowing out, which increase the company asset. Transaction that cause negative cash flow from financing activity, stock repurchase, dividend, paying down debt. Negative CFF number can mean the company is servicing debt, but can also mean the company is retiring debt or debt and dividend payment and stock repurchase, which investor might be glad to see. A company that frequently turns to new debt or equity for cash might show positive cash flow from financing activities. It might be the sign that the company is not generating enough earning. If a company is repurchasing stock and issuing dividends while the company earnings are underperforming. Format of cash flow statement in direct method. Operating activities, net earning from discontinued operation, net of cash, net earning from continuing operation, adjustment to reconcile net earning to cash provided by operation, depreciation and amortization, share-based compensation expense, deferred income taxes, non-cash loss gain and other net change in the operating account, inventory, other asset, account payable, accrued and other liability. Cash provided operating activity, continuing operation, cash provided by operating activity, discontinued operation, cash provided by operation. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो तब होता है माल के विक्रय और सेवा प्रदान करने से प्राप्त होता है, देनदारों से प्राप्त होता है, खरीदार शुल्क, फीस, कमीशन से नकद प्राप्तियाँ, आयकर वापसी, ब्याज और लाभांश के लिए प्राप्त होता है, प्रतिभूतियों का विक्रय। कैश आउटफ्लो होता माल का नकद क्रय, माल और सेवाओं का लेनदार भुगतान, नकद संचालन व्यय, मजदूरी वेतन का भुगतान, आयकर तो भुगतान, कर्मचारी तो भुगतान, ब्याज तो भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय। डायरेक्ट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग कैश रिसीव्ड, कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डेब्टर, trading, commission received, royalty received, throws cash received from the operating activity, less operating cash payment, cash purchase minus surrender, cash paid to the creditor, supplier minus surrender, cash paid for other operation, cash paid to employee. ए में से बी हटाते जो आएगा वह होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, less than the extraordinary expense, non-cash flow from used in operation activities. The inclusion of fundamental duties brought our Constitution in line with Article 29(1) of the Universal Declaration of Human Rights. The concept of fundamental duties was taken from the USSR. Originally 10 fundamental duties were listed. Later on, by virtue of 86th Constitutional, the amendment in year 2002, 11th duty was added. प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार, परिपरीक्षा रेफरेंडम, पहल इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन
या प्रत्याशी तो वापस बुलाना रिकॉल, जनमत संग्रह प्लेबिसाइट, कैश रिसिप्ट इनफ्लो फ्रॉम कस्टमर डेप्टर, क्रेडिट सेल एट ओपनिंग डेप्टर, ओपनिंग बिल रिसीबल, लेस क्लोजिंग डेप्टर, क्लोजिंग बिल रिसीबल, बैड डेप्ट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर। इसको हम अकाउंटिंग सिस्टम से लेजर में बना सकते हैं। टू बैलेंस पीडी ओपनिंग बैलेंस, टू कैश निकालना है, टू सोल्ड क्लोजिंग। इनडायरेक्ट मेडिटेशन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्री। फर्स्ट स्टेप, प्रॉफिट बिफोर कैश एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एडजस्टमेंट, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्रॉफिट लॉस से डेबिट साइड से, लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड वाले आइटम से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। स्टेप 3 में ऐड वर्किंग कैपिटल चेंज। डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो ऐड करेंगे, लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट होगा तो लेस करेंगे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो लेस करेंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेप 4 में करेंगे इनकम टैक्स पेड घटा देंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। स्टेप 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो ऐड करेंगे, लेस करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनडायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। अप्रत्यक्ष रीति से संचालन क्रियाओं से रोतर प्रभाव की गणना हेतु सर्वप्रथम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की राशि लिखी जाती है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जनरल रिजर्व डिविडेंड टैक्स घटा हुआ न हो। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, उसमें जनरल रिजर्व डिविडेंड टैक्स जोड़ेंगे तो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर पीवीटी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, लेस करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इसको आ जाएगा हमारा। धन्यवाद।